व्हाइट लाइन है फिर भी पढ़ ली रखेगा. What does it show? So you will not use unnecessarily things unless it is of use to you. फालतू idea नहीं चाहिए. Is it clear to all of you? Yes, so let's say from this side now you are come from here to here. Everybody has come here. Yes, now most probably GTO may say, okay, this is excuse now. You all can come and stand here now. Ground में. Which I told you the reason. सब इस पे चढ़ेगा ये टूटने का तो. Secondly, not only that, everybody gets a fair chance. We'll get to the next slide. Now you tell me from here to here, what is the next slide? Double bridge. Now you tell me, either say white color. Somebody does a fulcrum from here. Is it a good idea? No or yes? Why? Why? Slightly? Now you see, this तक आएंगे 4 feet. ये 4 feet. Correct? Yes, sir. So this is slightly more than 4 feet. Now how do you go from here to here now? Simple bridging. Yes, sir. We put a simple plank here. एक बार करके दिखाओ. अंदर जाएंगे. सिर्फ GTO जाएंगे अंदर. Then we are mind proof. Okay? So you are now here. Can you stand on the blue color? Yes, sir. Red color में can you stand? No, sir. Good. So you are all here. Now, when you are all here, you have two options. What are the two options? You can come from this route also, this route also. Now, which is the best route? Anybody? Why? Why? Because you have more space to accommodate. Very good. This is good. You have more space for people to accommodate here. When you go from here, it becomes a linear action. It's become narrow. तो चीज़ के अभी मैं बैठे हुए नहीं. आजा. Any problem? Go and sit back. ठीक है? Everybody okay now? Yes, sir. Okay, gentlemen, I told you, we have this in front of you. It is like you are a commando force. Come to the enemy area, but the enemy has put a minefield in front of you. You have to cross this minefield in 42 minutes. So you have certain equipment here, like weapons. Now you tell me you are a soldier, you don't know how to use these weapons. Can you fight a war? No, sir. Same way, these are your weapons. We call it helping materials. इसको मारना नहीं है, खुद को मदद करने के लिए. But these helping materials की usage जब तक आपको पूरा पता नहीं है, you are an untrained soldier. Similarly, you have got no use. So today's main मकसद यही होगा. We will learn the use of these helping materials in the best possible manner. Then everywhere it will be useful. Flow note thorough चाहिए तो मर्जी आपकी. लेकिन here you can have any kind of. आप जब मैंने एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इधर एक नॉट डालने के बाद में सपोज मान लो all of you listen to me what. Now you see. Suppose मान लो you people are making a turban. ठीक है? टर्बन बांध के मोटा हो गया. अब टर्बन रखते समय there is a possibility it can fracture. तो अंदाजन है ना ये. So to avoid this kind of situation, what you can do is just make one knot only. End में रखो उसको and ऐसे ही इधर से गिरा दो. इसमें दो फायदा. एक तो उधर क्लीन मिलेगा. सेकेंडली आपको पूरा बांध की टाइम वेस्ट नहीं होगा. थर्ड, इवन वन पर्सन कैन लोअर इट. अदरवाइज वुड हैव बीन 2-3 पीपल टू लोअर इट. फिर भी गिरने का खतरे थे. सो लुक फॉर द प्रैक्टिकल. है तो सेम आइडिया बट दे मॉडिफाइड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अब दिस इज हाउ थोड़ा पीछे रखो इसको. फाइल से पता चलता है. सो यू सी नाउ. सो हाउ डू वी डू दिस नाउ? एक आ जाओ उधर से आ जाओ. फिर यहाँ पे आ जाओ. नाउ तुम उसको हाथ दे दो और एक बार पैर रख दिया तुम इधर आ गए. नाउ दिस इज योर जॉब. तुम इधर पैर रखो. आप जो आने वाले को हाथ दे देंगे तो आ जाए. यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू कम नाउ? सी दिस. दिस इज द वे यू विल बी एबल टू कम दिस साइड. एनी डाउट्स ऑन दिस? नो सर. गो बैक.
Now, gentlemen, this is called double planking. We are not done, but let me tell you, ये generally stage 1 में नहीं आएगा. This will come probably in second stage or third stage. या half loop plus J भी आ सकता है, but then for learning purpose we are learning it here. This is called Pythagoras. आपने सीखा होगा. Yes, sir. So now you see how it is coming out. Now when you look at the structure or the block, you will find there is a triangular pattern forming up. Have you looked at it? Yes, sir. So when you have a triangular pattern and there is no direct bridging, इधर से direct bridging नहीं होगा क्योंकि plank अंदर जाएगा वो, plank connectivity नहीं है. In these kind of situations, you will have to make a Pythagoras. Yes, sir. How do you make a Pythagoras? So put on the leaf over there and Bring it. चलने के लिए प्लैंक इस्तेमाल करेंगे ना. ये आगे रखिए, बस हाँ, पैर रखो. डायरेक्ट इधर इस तरह से करो, थोड़ा इस तरह से करो, तब कनेक्ट होगा. Yes. Gentlemen, now we have made a Pythagoras. One twist inside, one twist outside. Cross. फायदा देखो, बात करते करते बन गया. You see this? ये देखो. Yes, sir. वाले ऊपर जाएगा. देखो तू. वेरी गुड, है ना? आप टाइट करने की देखो कैसे. इसको एक बार खींचो, एक बार पूरा घुमाने नहीं तो ऊपर जाएगा ना. नाउ यू टेक इट फ्रॉम हियर एंड फिगर 8. सी दिस फिगर 8. Yes, sir. वो थोड़ा ऐसे रह गया, उसको ऐसे घुमाना. सी दिस. बन गया. प्लैंक. Put the plank now. Oh, ना बीच में. yes, sir. See this? Yes, sir. You don't have to climb it. You have to show this is workable. Okay? Workable. है ना? Now, even if it is more than 4 feet, you can have double. Got it? Now you tell me you are here. How do you use this? You can only keep one. है ना? for bringing other last. हाँ, last में नहीं है ना? सर ये सर स्टॉपर बन तो जाएगा. वो बाकी सब- सारा रह गया. All of them have come from. यार ये देसी लेके भी आना है ना किसी को. Yes, sir. So the last person will remove the rope, hand it over here. Now how the last person is going to come? Now you have to see a drum को Plank. कहाँ रखना है. Now you see where you should keep. You have to keep it somewhere here, because then taking the resi out, you can make a direct Yes, sir. planking here. Come here, pull the plank and out. Yes, sir. Drum उतरी रहेगा. Yes, sir. Any doubts on this? No, sir. Clear होगा काम तो? Yes, sir. Remember one thing, OTMD हर जगह में नहीं मिलेगा. Maximum idea cantilever ही होता है, क्योंकि 70% of the structures में the design factor is cantilever. And don't use this word cantilever at the assessment. You must know the fund of cantilever, and I don't want anybody by hearting what it is. Now to understand it, you should know to make a what is cantilever. It's a simple machine you have learned in physics. ये कोई rocket science नहीं है. You already learned it, but we are not used it. Right? So to recapitulate what you have learned earlier in your school times, I am again telling you what it is. Firstly, understand the funda behind it, then we will use it. Right? Now to make a cantilever, suppose Manla, this is a mini plank. Okay, this is a mini plank. Now you look at here. To have a good cantilever, you need something at 1/3 of the plank. 1/3. Okay? Now 2/3 is suspended, 1/3 is within the structure. Look at here. 2/3 suspended, 1/3 is within the structure. ये फंडा clear हो गया? Yes, sir. Now to make it possible, 1/3 में एक support चाहिए. What is support? Support is something which is keeping the plank higher than the ground. Yes. That's it. Uplifted. Now, holding it in a level, 2/3 बाहर है, suspended है, 1/3 पीछे है. Can it sustain just because of support? No, sir. Easily will go fall down. Because this side is heavier. So to keep it parallel to the ground, you need something on the rear of the plank. This is called stopper. So you
साइड के अंदर से गोल कर दो, साइड पे आ जाओ। नो अगेन आई विल शो यू। छोटा साइड तो नीचे बैठ जाओ। हाँ ये एवरीबॉडी साइड। हाँ थोड़ा तुम जाओ। नाउ यू सी हाउ वी आर डूइंग। फिर उस तरफ आ जाओ चाहिए। पहले देखो कैसे होता है, छोटा साइड, बड़ा साइड, लंबा साइड। छोटा साइड को लंबा इसकी अंदर चारों तरफ से घुमा लो एक बार, सी दिस। और उसी पे ही एक नॉट दे दो। दिस बिकम्स हैंगमैन लूज। हो गया? अब उसको टाइट करो। टाइट किया? आप टाइट करके उल्टा मारना है, ऐसे मारे तो लूज हो जाएगा, ऐसे ही मारना है। सी दिस, यू हैव टू रोटेट फ्रॉम द, कीप कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। अच्छा इस समय अभी जमीन में टच हो रहा है, लेकिन जीटीओ अगर बोल रहे कि अभी माइनफील्ड नहीं माना जाएगा तो इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है, देन इट्स ओके। सो फाइनली आप उसको घुमा के अंदर ही रख दो। नाउ जेंटलमैन, दिस इज 1/3 और दिस इज 1/3।